Yesterday we have read that what are resources. Today we will read that interdependency, the relationship between nature, technology and institution. I told you that without human being all the resources are meaningless. By the effort of human being you extract minerals from the mines and it need technology. So by the help of technology human being make relationship with the physical environment and they create an institution. By the help of example that I will make you clear that suppose कि हमें मिनरल्स निकालनी हैं तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है बाय द हेल्प ऑफ दैट टेक्नोलॉजी वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द माइंस. सो हमने फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन कायम किया एंड देन वी मेक इंस्टीट्यूशन जैसे कि मिनरल इंडस्ट्री. वहाँ ये रॉ मटेरियल हम लोग भेजते हैं और बाय द हेल्प ऑफ दैट रॉ मटेरियल वी गेट फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो हमने वो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया. सो ऑल दिस थिंग्स जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, resources are present but its mere presence do not guarantee development. For these you need different factors. What are these factors? They are availability of capital, availability of resources, availability of technology, skilled and non-skilled labor, communication and transportation. All these factors when available there, then it's the resources, the in resources की then the development take place. Okay, so by the help of all these factors development take place. Now next point, classification of resource. Okay, so on the basis of resources can be classified in the following ways. On the basis of origin, resources are of two types, biotic and abiotic. Biotic resource in which there is life. For example, human being, flora and fauna means plant life and animal life, fisheries, livestock, they are called biotic resource. An abiotic resource in which the resources on which there is no life, like land, soil, air, water, rocks, metals. Okay. Second, on the basis of exhaustibility, resources are of two types, renewable, non-renewable. Resource which you can renew again and again, that those resources are called renewable resource. For example, solar energy, wind energy, water energy, forest, wildlife, etc. The renewable resource may further be divided into continuous or flow. Suppose कि forest, if you cut all the trees, then from where do you get the seeds? Okay, तो इस तरह से नहीं करनी है. We people have to use it judiciously. And non-renewable resource which you cannot renew again and again, for example, they are fossil fuels, coal, petroleum, natural gas. It is also renew. It can also renew, but it take millions of years in your lifetime. Next generation means so many generations. वो
मिलियन ऑफ ईयर्स हम लोग वो उतनी लंबी ज़िंदगी वी कैन नॉट लीव, सो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, सो वी कैन नॉट, it is said that they are non-renewable. Okay, now third, that on the basis of ownership, on the basis of ownership, owner means malik. Resources are of two type. Individual resources are of four types. Individual resources, community owned resources, national resources and international resources. इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिसकी मालिक आप खुद हो, कोई भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लाइक एनी बिल्डिंग, लाइक एनी पॉस्चर, प्लॉट्स और पॉन्ड, इस तालाब की मालिक हम हैं, इसमें सारी जो फिशेस है वो मेरी संपत्ति है. दिस इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज. देन कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. Suppose village community, grazing ground, burial ground, village, pond, park, गांव के सारे लोग उसके यूज़ करते हैं. This is community owned resources. Next, national resources. Technically all the resources belong to a nation. The country has legal power to acquire even private property and public good. Suppose कि इस ज़मीन पर मैं रहती हूँ और आसपास की कुछ ज़मीनें सारी मेरी है. अब वहाँ से रास्ता निकलेगा, ये प्लानिंग हुई अर्बन डेवलपर्स के प्लान के तहत मेरे ज़मीन से होकर वो रास्ता गुजरेगी, तो वे लोग मुझसे वो ज़मीन ले ही सकते हैं और मुझे देना होगा. उसके बदले में मुझे कुछ क्षतिपूर्ति मिल सकती है, मुझे कुछ अमाउंट मिल सकता है, बट उन्हें चाहिए तो मुझे उसे देना होगा. तो ये है नेशनल रिसोर्स का नेशन का पावर. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land. All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundary of our country and oceanic area. 12 nautical miles in the ocean, 12 nautical miles equivalent to 22.2 kilometer. आर टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर. 22.2 किलोमीटर या फिर 12 नॉटिकल माइल ओशियन के तहत जो वॉट एवर इज़ देयर, वो ओशियनिक वाटर, दे बिलोंग टू आवर नेशन. ओके, एंड वाटर इंटरनेशनल रिसोर्सेज. देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. सो ओशियनिक, मैंने नेशनल रिसोर्स में कहा 12 नॉटिकल माइल ओशियन में हमारे नेशन का है, और ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्स. उसके मालिक कौन है? वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. Okay, and if you need to use